Hello and welcome back to Over a Coffee with Himanshu. First of all, I would like to wish all of you a very happy new year. And with the start of this new year, we are starting a new series on our channel called What Is. In this series, we'll be picking up one topic from marketing and business angle and try and understand that. So, to start with the series, the first topic we've taken is what is marketing? Okay, so what is marketing? Marketing is the process of identifying customers and creating, communicating, delivering, and exchanging goods and services for the satisfaction and retention of those customers. ये तो definition हो गई. Now let's understand what exactly marketing is. Simple language में, marketing is communicating your USP to the right audience at the right time, at the right place, using the right language in order to achieve a goal. Okay, अब इसे डिटेल में समझते हैं. Communicating your USP. USP is unique selling proposition, the main selling point of your overall marketing campaign. It can be anything. It can be a product feature that you've launched. It can be a service that your competition doesn't provide, or it can also be an offer. Now, this USP has to be communicated to the right audience. A right audience कौन होती है? राइट ऑडियंस इज द पर्सन और पर्सोना जिसको सेंटर ऑफ फोकस रख के आप पूरी प्रोडक्ट या फीचर को डेवलप करते हो. लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट्स से यू लॉन्च्ड अ न्यू वीआर गेम. नाउ वीआर गेम्स का इन जनरल टारगेट ऑडियंस होता है यूथ. ओके, सो आप उस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए यूथ को टारगेट करोगे वीआर गेम के लिए, राइट? यू वोंट टारगेट 50 एंड अबव पीपल. Similarly, the next step is to communicate it at the right time. The right time, for example, if you want to launch that VR game in India, तो आप इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग उसको कम्युनिकेट करो. आप कहीं यूएस या कनाडा के हिसाब से कम्युनिकेट कर दोगे इंडिया में, तो आधी ऑडियंस आपकी सो रही होगी जब आपकी ऐड चलती है. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइम टू कम्युनिकेट एट. ये मैंने बहुत ब्रॉडर एग्जांपल दे दिया. इसका अगर आप और डिटेल में जाओगे, हर एक प्रोडक्ट के लिए उसकी कम्युनिकेशन का सही टाइम होता है. ओके, नेक्स्ट लेवल इज कम्युनिकेटिंग इट एट द राइट प्लेस. अब वीआर गेम है तो इसको लॉन्च करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉलेज फेस्ट. आप कॉलेज में जाओ जहाँ पे यूथ है, वहां जाओ. अब आप इसको कहीं बुक फेयर पे तो नहीं जाके प्रमोट करोगे विच इज अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ सम ऑथर जहां पे मैच्योर कस्टमर आते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग वेयर टू टारगेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यूजुअली यू फोकस ऑन वेयर योर कस्टमर्स आर एंड आप वहां जाके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो. द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज यूजिंग द राइट लैंग्वेज. आपको पैन इंडिया लॉन्च करना है अपना वीआर गेम. आप लैंग्वेज क्या यूज करते हो? यू यूज ओनली हिंदी और यू यूज ओनली तमिल, one of the regional languages. Using that, you will not be able to reach out to the complete base of yours. Either you pick, for every territory you have different languages, or you use English, which is widely known in India, right? Similarly, if it's a campaign जो कि आपको किसी और कंट्री में लॉन्च करना है, तो उस कंट्री की लैंग्वेज आप यूज करोगे जो कि वाइडली स्पोकन है. फॉर एग्जांपल इन कनाडा इट्स इंग्लिश एंड फ्रेंच, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन यूएस इट्स इंग्लिश. यूएस के अंदर हिंदी में आप कम्युनिकेशन दे दोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. So it is important to use the right language when you are planning your marketing strategy. Okay, so ये सारे steps यूज करे जाते हैं to achieve a goal. मार्केटिंग कैंपेन के लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So whenever you plan anything, you have a goal in mind, ताकि एंड ऑफ द कैंपेन पे आप देख पाओ कि ये कैंपेन से आपको क्या हेल्प हुई है, क्या बेनिफिट हुआ है. अगर आपने विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कैंपेन एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि मेरा मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल था या फिर अनसक्सेसफुल था. हेंस, इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू मी, मार्केटिंग इज कम्युनिकेटिंग योर यूएसपी to the right audience at the right time, at the right place,
in the right language to achieve an objective. That's it for today. Thank you so much for sticking around. And if you like the video and the content, please hit like, share the video, and subscribe to our channel. And in our future videos, if you want us to cover any other topic, do share that in the comment box below. We'll make sure to cover all of the topics that you share. Until next time, I'll see you over another round of coffee.